फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगेगी। नॉर्मली इलेक्ट्रोस्टैटिक में था कि द फोर्स एक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक में होगा कि जो फोर्स एक्ट कर रही है in addition to charge on the particle at the magnetic field in which it is placed. It also depends on the velocity. When we say velocity, it means it depends both on magnitude and direction. कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा और वो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि लाइक इफ यू हैव चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग जनरली हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेलोसिटी in a magnetic field of intensity. In charge particle जो force एक करेंगे, it was experimentally found that this force is directly proportional to the magnitude of charge, the magnitude of field intensity, and d sin theta. d sin theta means velocity के दो components बन सकते हैं, velocity के जो दो components बनेंगे. एक है velocity के components एक this is v. एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट, इसके परपेंडिकुलर. C cos theta and sin theta. So combining these, we can say that F should be sin theta or F is equals to constant of proportionality was found to be 1. F is equals to QED sin theta. वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो इट विल बी B cross B. Now when we are writing as cross product B cross B, इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एज वेल एज B और डायरेक्शन निकालने का मेथड सेम. राइट हैंड के फिंगर्स को B पे रखो एंड टर्न इट टुवर्ड्स B. मैंने वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में लिया तो राइट हैंड के फिंगर्स वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न. सो इट्स परपेंडिकुलर इनवर्स. ये B क्रॉस B करके तो आउटवर्ड जाता. B cross B is its inverse. The force is acting perpendicular and given by right hand rule. अगर force और velocity perpendicular है तो what can you conclude from it? जब हमने direction निकाल लिया तो सिर्फ force is perpendicular because B cross B है. If force is perpendicular to both velocity as well as magnetic field, it basically implies that force and displacement are also perpendicular. And if force and displacement are perpendicular, that means work done is zero. The magnetic force will not do any work. Magnetic force will not do any work and it acts as a radial force. Radial force का मतलब क्या होता है? It can provide only radial acceleration or centripetal acceleration. It can change the direction of velocity, but it cannot change the speed. काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते. अगर आप मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करोगे मैग्नेटिक फोर्स का एक ही रूल है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन इन विच अ चार्ज पार्टिकल मूव्स बट speed remains same, kinetic energy remains same, work done by magnetic force will always be zero because force and displacement they are perpendicular to each other. अगर force और displacement perpendicular है तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड को भी हम ले रहे हैं दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर F will be perpendicular that means you can say F dot Q will be zero and F dot B will also be zero. If force magnetic के भी perpendicular है force velocity के भी perpendicular है. So इसका important concept रहता है. So when we say that it's each set here, हमारे पास different case बन सकते हैं.
अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है, कोलिनियर मींस आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है तो व्हाट विल बी द फोर्स? अगर v और b कोलिनियर है, थीटा इज आइदर 0 or 180. So if they are collinear, we say that magnetic force will always be 0. Electrostatic में ऐसा नहीं था, एक charged particle is placed in electric field, force will act on it. Positive charge है तो in the direction of field, negative है तो in direction opposite to it. But if charged particle is there and it's moving in magnetic field, which is and velocity is collinear with magnetic, तो force 0 है. Charged particle rest पे है तो भी force 0 है. That means magnetic force acts only if charged particle is moving. कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे तो मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट एक्ट ऑन इट। बिकॉज आगे जाके हम करेंगे कि इफ यू हैव टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ रहे। अगर हमारे पास टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस केस में केस बन जाता है, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे इट जनरेट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट आल्सो। बट इफ यू हैव स्टेडी फील्ड मींस जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो हम लेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज एट रेस्ट। मैक्सिमम फोर्स कब एक्ट करेगी फॉर अ गिवन स्पीड? जैसे मैक्सिमम फोर्स एक्ट व्हेन v and b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो फोर्स एक्टिंग एज मैक्सिमम, कोलिनियर है तो 0, अदरवाइज इट्स 2v sin थीटा। इसमें देखो कुछ पूछने वाला है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन p क्रॉस b के ऑपोजिट, कि v क्रॉस b से जो डायरेक्शन निकलेगी दैट इज द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स आ रही है इनवर्स, नेगेटिव होगी तो इट विल बी आउटवर्ड्स। इसमें देखो पहले कुछ पूछने वाला है तो otherwise you write force acting on charged particle in magnetic field. Force acting on charged particle in magnetic field, आपने डायग्राम बना charged particle. Right. It was experimentally found that whenever a charged particle Q moves in a steady magnetic field B, whenever a charged particle Q moves in steady magnetic field B, the magnetic force acts on it. And it was experimentally found that, magnetic forces in part directly proportional to the magnitude of charge. It is F proportional to Q. It is directly proportional to the magnitude of magnetic field intensity. Directly proportional to the magnitude of magnetic field intensity. It is F proportional to B. And
directly proportional to component of the velocity, directly proportional to component of velocity, which is perpendicular to the magnetic field. Directly proportional to the component of velocity, which is perpendicular to the magnetic field. Directly proportional to component of velocity, which is perpendicular to the magnetic field. Combining all three results. Combining all three results. F proportional to maybe sine theta. Instead of cosine was found to be 1. Expect the found. नहीं सर हाँ जी. सर अवृता को के अंदर ले लो Square में क्या था? Vector form of x then can suppose be cross. The direction of magnetic force. The direction of magnetic force is given by direction of magnetic force is given by right hand rule for cross product of vectors. Right hand rule for cross product of vectors is place the fingers of right hand. Place the fingers of right hand in the direction of velocity and turn it towards magnetic. Turn the fingers towards magnetic field. Thumb gives us. Thumb gives us the direction magnetic force. And this प्लीज force ये is लास्ट पार्ट always रिपीट कर दो perpendicular. This ये थंब force वाला is always perpendicular to C as well as B, velocity and magnetic. So, इससे पहले This वाला force is always perpendicular to both B as well as B. Both सर B as well as B. एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर Which written note below this.
No, first point later. First point. As as force is perpendicular to, as force is perpendicular to both velocity as well as magnetic field. It implies that it implies that force is perpendicular to the displacement also. Force is perpendicular to displacement also at any instant. Thus, magnetic force acts as magnetic force acts as radial force. Magnetic force acts as radial force. Work done by magnetic force acts as radial force. Work done by magnetic force will always be zero. Work done by magnetic force will always be zero. Second point में लिख लो. As magnetic force does no work. As magnetic force does no work. When charged particle moves through it. When charged particle moves through it. It also implies that kinetic energy. It also implies that kinetic energy of the charged particle as it moves through. Kinetic energy of the charged particle as it moves through. Magnetic field is zero. Kinetic energy of the charged particle as it moves through, is constant. Kinetic energy of the charged particle as it moves through. Magnetic field is constant. Momentum change होगा. Yes. Momentum change होगा because direction change होगी. So magnetic force can change the direction of velocity. क्योंकि radial force है तो वो direction change कर सकती है. So you can read in each part. As magnetic force can change. As magnetic force can change the direction. As magnetic force can change the direction. Therefore, as magnetic force can change the direction, therefore, momentum of the charged particle can change. Momentum of the charged particle can change. Next to right. Special cases. Special cases.
Indian भी है collinear. सर लाइन रिपीट कर दो। फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। मेरे को आपकी नहीं आई, लेट मी सी उसका भी क्या रीजन है. चलो अभी आप टाइप करते रहो, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को. मेरी सुन रही है ना क्लियर अब? यस सर। Okay. So if V and B are collinear, the angle between velocity and magnetic field सर ये पहला स्पेशल केस है. is either 0 or 180. Angle between velocity and magnetic field is either 0 or 180. In both the cases, magnetic force will be 0. Special cases में था, first case था V and B are collinear. If V and B are collinear, the angle between force and magnetic field is either 0 or 180. In both the cases, magnetic force is 0. So अब normally ऐसे लिख दो कि F is equals to and if V and B are perpendicular. So force is QVB. अगर velocity और magnetic field perpendicular है तो path followed क्या हो जाएगा? अगर velocity and magnetic field perpendicular है तो what will be the path followed? सर्कुलर. It will be circular. Because अगर हम ऐसे लें कि अगर charged particle है and it's moving in magnetic field, हमने किसी इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन ले ली, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड्स क्रॉस, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बी क्रॉस बी. हमने बी को लिया ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करना शुरू कर देगा. सो नॉर्मली वो पाथ फॉलोड के केस अलग करते हैं. पहले इसके एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं.
ये क्वेश्चन देखो. An experimental's diary reads as follows. A charged particle is projected in magnetic field. हमें magnetic field दिया है. A charged particle is projected in magnetic field given by 7 I cap minus 3 J cap. And acceleration of the particle is found to be. So इसको x लिख दो, xi cap plus 7j cap. The number to the left of i's last expression was not readable. हमने बताना है x कितना है. x is not readable, मतलब बॉक्स जो बनाया हुआ है, सो वो नहीं हमें पता क्या है. तो what will be the value of x? हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया और एक्सेलरेशन दी है. सो कौन सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? बिकॉज हमने कहा जो फोर्स है, फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन इन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी परपेंडिकुलर. और अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. तो हमें बी भी दिया, ए भी दिया. बी डॉट ए शुड बी 0 और एक्स की वैल्यू बतानी है. सो वी से मैग्नेटिक फोर्स इज रेडियल, or you can say as magnetic forces perpendicular to V as well as B. So we can say that F dot B should be 0, or F can be written as MA. MA dot B is equals to 0, or you can say A dot B is equals to 0. So इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. Dot. So you get 7x. X will be 3. समझ में आया कैसे किया? क्लियर है सबको? बिकॉज हमें दिया था बी और ए की वैल्यू दी है, बी और ए की वैल्यू दी है, एंड हमने बताना है कि जो अनरीडेबल वैल्यू है वो कितनी है. सो वी हैव टू यूज द कंसेप्ट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेशन दे आर परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए. नेक्स्ट देखो, magnetic field is given 4 into 10 raised to power minus 3 Tesla exerts a force of 4I plus 3J into 10 raised to power minus 10 on a particle having charge 10 raised to power minus 9. Find velocity of the particle. करो इसको solve. F is equals to QV cross B. हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है, फोर्स दिया और चार्ज दिया है, वेलोसिटी बतानी है. हमें इसमें F गिवन है, Q भी गिवन है और B भी गिवन है. V की वैल्यू निकालो क्या आएगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ V. चलो सॉल्व इसे. Find the value of velocity.
है किसी का आंसर? मैथ्स है तो सिंपल। एफ भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, वी बताना है। मैं क्वेश्चन में ही हिंट दिया था। वेलोसिटी इज इन एक्स वाई प्लेन। वेलोसिटी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो यू कैन टेक इट एज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। हम वेलोसिटी को वी एक्स आई प्लस वी वाई जे ले सकते हैं। फोर्स हमें गिवन है, आप इस रिलेशन को ऐसे लिख लो। फोर आई, दिस इज फोर्स। चार्ज इज 10⁻⁻⁹ मैग्नेटिक फील्ड इज सिर्फ जेड डायरेक्शन में। यही गिवन है हमें क्वेश्चन में। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगी वैल्यू? आई कंपोनेंट आई कंपोनेंट निकालोगे तो इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आई कंपोनेंट इज सिमिलरली जे कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ से वी एक्स और वी वाई की वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करोगे तो यहाँ से वी एक्स वी वाई आ जाएगा आपके पास। तुमने वेलोसिटी बतानी थी कि वेलोसिटी कितनी है। क्लियर है मेथड? यस। किसी को डाउट है तो टाइप कर दो, बिकॉज मेरे को साउंड नहीं सुन रही किसी की। किसी को डाउट है तो यू कैन ऑलवेज टाइप, otherwise next right. Path followed by charged particle in magnetic field. Path followed by charged particle in magnetic field. इसमें तीन केस आएंगे। फर्स्ट अगर हम लें कि अगर V और B कोलिनियर है, अगर V और B कोलिनियर है तो मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो है तो दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, it will move undeviated and its path will be straight line. अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज कर सकता था। सो वी से कि अगर वी एंड बी को लीनियर है, neither magnitude changes nor direction changes, path followed will remain same, straight line में मूव करेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। So you can put the heading path followed by charged particle in magnetic field. Path followed by charged particle in magnetic field.
Path followed by the charged particle in magnetic field. You can read first case. If velocity and magnetic field are collinear. If velocity and magnetic field are collinear. You can say if V and B are collinear, no magnetic force X, no magnetic force X on the charged particle. If V and B are collinear, no magnetic force X on the charged particle. Therefore, path followed by the charged particle will be straight line. Therefore, path followed by the charged particle will be straight line. Its velocity and momentum will be constant. Its velocity and momentum will be constant. Second is if V and B are mutually perpendicular. Second is if V and B are mutually perpendicular. So अगर हम ऐसे लें, there is a region in which magnetic field is present, cross. Charged particle enters here. इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? राइट हैंड के फिंगर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में. Magnetic field is inwards. So V cross B, the magnetic force acts upwards. इस पे जो magnetic force act करेगी और इस magnetic force का magnitude कितना होगा? If magnetic field is B, velocity is V. You see that force which acts is QVB. QVB sin 90 or QVB. Now because sorry, अगर force और magnetic field perpendicular है तो we say force acts as centripetal force. Because ये डायरेक्शन चेंज कर सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती. So if it acts as centripetal force, then we can say QVB is equal to mv square by r. This magnetic force provides the centripetal force. So we say if V and B are perpendicular, the magnetic force provides the centripetal force and the charged particle will move in circular path. और जो circular path का जो radius होगा, that is mv by qb. अगर आपको इसमें पूछा जाए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर लूप, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी. और यहां से v किसके इक्वल आएगा? क्यू बी आर ओवर एम. दिस रिजल्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन फिजिक्स. फर्दर जब आप हाई एनर्जी फिजिक्स कभी पढ़ोगे, that when charged particle moves in magnetic field, time taken is 2 pi m by qb, which basically signifies that the time taken to move in circular path is independent of the radius. वो छोटे सर्कल में मूव करे या बड़े सर्कल में मूव करे,
टाइम टेकन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेडियस। उसका रीजन है ये फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू क्यू बी आर बाई एम। जैसे जैसे रेडियस बढ़ा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है, और यू कैन से दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, कि वो जितनी ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा उतने बड़े रेडियस में मूव करेगा। तो जितना बड़ा सर्कल है स्पीड भी उतनी ज्यादा है, सो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर रोटेशन इज ऑलवेज द सेम। जो हम पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बनाते हैं, we use this concept a lot कि time taken by a charged particle in magnetic field it's independent of the radius of circular path। so इस केस में जब फोर्स लगेगी ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो v क्रॉस b की डायरेक्शन so we say at all points fm is perpendicular to velocity। तो ऐसे सेमी सर्कल पूरा करके एंड देन इट विल कम आउट। अगर पूरे रीजन में है तो यू कैन अज्यूम कि वो सर्कल में भी मूव कर सकता है, बट इस केस में इसे इट विल कंप्लीट अ सेमी सर्कल एंड कम आउट। और सेमी सर्कल पूरा करने का टाइम सर्कल से हाफ पाई एम अपॉन क्यू बी, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप फोर्स निकालोगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो सेकंड केस लिखिए, डायग्राम बना लो। इफ v and b are mutually perpendicular, if v and b are mutually perpendicular, if velocity and magnetic field are mutually perpendicular, डायग्राम बना लो पहले। You can write if v and b are, if v and b are mutually perpendicular, if v and b are mutually perpendicular, the magnetic force is given by the magnetic force is given by F is equals to QVB sin 90 or QVB. F is equals to QVB sin 90 or QVB. The direction of magnetic force is perpendicular to the velocity as shown. Direction of magnetic force is perpendicular to the velocity as shown. Therefore, therefore,
Magnetic force provides. Therefore, magnetic force provides the centripetal force. Therefore, magnetic force provides the centripetal force, and the charged particle will move in. And the charged particle will move in circular path. And the charged particle will move in circular path. That is QV as magnetic force provides the radial force, as magnetic force provides the radial force. Equating the two forces. R is radius of circular path in which charge will move. So use 2 pi m by qb. So you can write this implies that time taken to complete circular orbit. This implies that time taken to complete circular orbit is independent of the speed of charged particle and the radius in which charged particle moves. And the radius in which charged particle moves. It only depends on magnetic field intensity and specific charge. The specific charge was charge to mass ratio. It only depends on magnetic field intensity and specific charge. It only depends on magnetic field intensity and specific charge.
Time taken to complete semicircular orbit is independent of speed as well as radius. It depends only on magnetic field intensity and specific charge. अगर इसमें kinetic energy निकालनी हो, kinetic energy with which charged particle moves. So it's half mv square. And v was qbr over m. जितने फॉर्मूलाज कर रहे हैं सर्कुलर पाथ के, ऑल आर इम्पोर्टेंट, एमसीक्यूज बहुत आते हैं इन पे. सो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m. अब कई बार आपको दिया होगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग चार्ज पार्टिकल एंटर्स विद सर्टेन वेलोसिटी, दे कंबाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांसेप्ट विद मैग्नेटिक. जैसे चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v एंड देन इट एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड. तो उस केस में आपको v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. नोट में लिख लो इसके नीचे, नोट में लिख लो इसके नीचे. If charged particle starting from rest, if a charged particle starting from rest is accelerated through, a charged particle starting from rest is accelerated through potential difference V, capital V. If charged particle starting from rest is accelerated through potential difference V, before it enters the magnetic field, then speed of charged particle can be calculated from energy conservation. We can say decrease in electric potential energy decrease in electric potential energy is QV. So formulas में फिर ये स्पीड की वैल्यू पुट कर देनी है अंडर रूट ऑफ 2qv/m. जैसे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला R is equals to mv/qb. If you substitute 2qv/m, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2mv/qb स्क्वायर. तो ये दो केस है. थर्ड केस आता है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में ना कोलिनियर है ना 90 डिग्री का एंगल है, उस केस में कैसे करेंगे? कि अगर मैं लूं वी एंड बी में एंगल थीटा है, से वेलोसिटी इस केस में पाथ फॉलोड क्या हो जाएगा?
कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा बन रहा है तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी एंगल थीटा बनेगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एट अ टाइम अगर मैं एक केस लूं कि अगर मैं बोलूं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो पाथ फॉलोड शुड बी स्ट्रेट लाइन, और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो पाथ फॉलोड इज सर्कुलर। सो रिजल्टेंट पाथ क्या हो जाएगा? अगर v और b पैरेलल है तो उसे सीधा जाना चाहिए था, परपेंडिकुलर है तो उसी जगह पे घूमना चाहिए था। अगर दोनों है तो इसे इट फॉलोज अ हेलिकल पाथ, वो गोल गोल घूमते हुए आगे जाएगा। तो हमने इसमें पिच ऑफ हेलिक्स निकालनी होती है कि पिच ऑफ हेलिक्स कितनी है, टाइम कितना लगेगा। तो उसको कल कर दे क्लास में, एंड कल नॉर्मल मतलब जो आपके टाइमिंग्स हैं बैच के उसी में ऑफलाइन होपफुली, मतलब अगर कुछ होगा नहीं तो ऑफलाइन ही लगेगी क्लास। इसमें से देख लेना, कुछ पूछने वाला हो तो कल क्लास में पूछ लेना। पैराबोलिक नहीं आएगा, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। स्पाइरल पाथ में मूव करेगा, गोल गोल घूमते घूमते आगे जाएगा।